इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों के विकास को समर्पित बजट है। यह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर की अवधारणा को चरितार्थ करने वाला बजट है। यह ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर जोर देने वाला बजट है। बजट का आकार बढ़ाकर 39.45 लाख करोड़ करना कोरोना काल में भी भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके से दर्शाता है। फिजिकल डेफिसिट का लक्ष्य 6.9% से घटाकर 6.4% करना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की कोरोना के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के साये में पेश किया गया यह दूसरा बजट है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक नया आयाम देते हुए यह बजट सभी वर्गों को, छोटे बड़े उद्यमियों के आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। यह महज एक साल के डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है, बल्कि देश के लिए अगले 25 साल की बुनियाद रखने वाला यह ब्लूप्रिंट है। ऐसे सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी एवं देश के जन जन और हर क्षेत्र के सर्वांगीण कल्याण के प्रति समर्पित आम बजट के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को, उनकी पूरी टीम को अपनी ओर से और पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से बधाई देता हूं और उनका हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं। पिछले वर्ष 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 100 लाख करोड़ की गति शक्ति योजना लॉन्च की थी। इस बजट में गति शक्ति को एक नई उड़ान मिली है। इस बजट में आत्मनिर्भर भारत के लिए लक्ष्यों को पाने के लिए शुरू की गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना को जबरदस्त रिस्पांस मिला है। इससे लगभग 60 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी और अगले 5 वर्षों में 30 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त उत्पादन होगा। ये नए भारत की नींव रखेगा। 25,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे का निर्माण, जिस पर लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। देश में 5 बड़ी नदियों को जोड़ने के लिए जल संसाधन विकास मंत्रालय की भी मदद से कार्य करने की योजना बनाई गई है। बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के लिए बजट में 44,605 करोड़ रुपए का खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत पानी की समस्या से जूझ रहे बुंदेलखंड क्षेत्र के लगभग 62 लाख लोगों को पेयजल मिलेगा। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनको धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार, NDA की सरकार कृषि विकास, किसान के कल्याण एवं उनकी आय को दुगना करने के लिए कटिबद्ध है। सरकार ने MSP पर रिकॉर्ड खरीदी का प्रावधान बजट में किया है। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। गंगा किनारे रहने वाले किसानों की जमीन पर खास फोकस दिया जाएगा, जिसके लिए 5 किलोमीटर का चौड़ा कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई गई है। लैंड रिकॉर्ड्स के लिए डिजिटलाइजेशन की योजना पर भी जोर दिया गया है। इस बजट में 130 लाख MSMEs की मदद के लिए सरकार द्वारा 2 लाख करोड़ का एडिशनल लोन मुहैया कराने के लिए कदम उठाए गए हैं। अगले 5 साल में MSMEs को लगभग 6,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही यह व्यवस्था भी की जाएगी कि इसका सदुपयोग हो सके। इस बजट में प्रावधान प्रधानमंत्री आवास योजना को एक विस्तार दिया गया है। गरीबों के लिए 80 लाख अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे। इसके लिए बजट में 48,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है।
भारत के संघीय ढांचे को मजबूत करते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2022-23 के में राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन करने की घोषणा की है, जो 50 साल के लिए ब्याज मुक्त होगा और राज्यों को दी जाने वाली सामान्य ऋण से अलग होगा। मैं इस ऐतिहासिक कदम के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का स्वागत करता हूं। नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वहीं उत्तरी बॉर्डर पर स्थित गांवों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाए जाने का प्रावधान किया गया है। टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किए जाने की भी घोषणा की गई है। साथ ही मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 अभियान के भी शुरू किया गया है। साथ ही साथ 2 लाख आंगनबाड़ी को भी अपग्रेड किया जाएगा। लगभग 60,000 करोड़ रुपए की लागत से हर घर नल जल पहुंचाने का प्रावधान किया गया है। देश के सभी 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को बैंकिंग से जोड़ा जा चुका है। अब आजादी के 75 साल पूरे होने पर 75 डिजिटल बैंक 75 जिलों में बनेंगे। देश के सभी पोस्ट ऑफिस को कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। यह सराहनीय कदम है। लगभग 8,500 पुराने कानून को खत्म किया गया है। 1,486 केंद्रीय कानून खत्म किए गए हैं। ग्रीन क्लियरेंस विंडो का दायरा बढ़ेगा। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन पॉलिसी लाई जाएगी। महामारी के दौरान स्कूल बंद रहने से गांव के बच्चे 2 साल शिक्षा से वंचित रहे हैं। पीएम ई विद्या के तहत ऐसे बच्चों के लिए एक टीवी चैनल प्रोग्राम के तहत अब चैनल 12 से बढ़कर 200 कर दिए जाएंगे। ये चैनल क्षेत्रीय भाषाओं में होंगे। एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए टैक्स रेट में मिली संपत्ति को जो जब्त करने का प्रावधान है वो सराहनीय है। कॉर्पोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% कर दिया गया है, जिससे उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25% रक्षा अनुसंधान एवं विकास उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा के लिए खोला जाएगा। एसपीवी मॉडल के माध्यम से डीआरडीओ और अन्य संगठनों के सहयोग से सैन्य प्लेटफॉर्मों और उपकरणों का डिजाइन और विकास के लिए निजी उद्योग को प्रोत्साहित किया जाएगा। मैं पुनः इस ऐतिहासिक बजट के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी एवं उनकी पूरी टीम को हार्दिक अभिनंदन करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। यह आम बजट कोविड संक्रमण काल से निकल रहे देश के आर्थिक स्थिति को नई ताकत देगा और देश के सर्वांगीण विकास में मदद करेगा। Budget focused on welfare and upliftment of the poor and weaker sections. It is the budget that will empower the poor and make them self-reliant. It is a budget dedicated to rural development, to agriculture development, welfare of our workers, infrastructure development, and development and progress of our Himalayan and northeastern states. The budget also emphasizes the commitment of Narendra Modi government towards social justice, equality, life with dignity, and equal opportunity to all. The budget will further facilitate the ease of living, which has been the hallmark of the Bharatiya Janata Party government led by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. In the budget, the expenditure has been pegged at rupees 39.45 lakh crore, which showcases India's strength as a rapidly growing economy. The government has also done a commendable job in reducing the fiscal deficit target
from 6.9% to 6.4%. The union budget comes at a time when India, under the dynamic leadership of our Prime Minister, Honorable Shri Narendra Modi ji, is fighting the decisive battle against the corona pandemic. This budget fulfills the hopes and aspirations of all sections of the society, particularly the micro, small and medium enterprises sector. Besides giving India's infrastructure development a whole new dimension, the budget is not a one-year economic agenda, but our budget is a solid blueprint of the coming 25 years of economic development that will lay a strong foundation of making India world's strongest economy and a developed nation. I congratulate and thank our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. I also congratulate Union Finance Minister, Srimati Nirmala Sitharaman ji, and her entire team for giving us such a progressive and growth-oriented budget which touches lives of all sections of our society, and it addresses the needs of all sections of our economy. In his independence speech, Prime Minister Narendra Modi ji, on the ramparts of Red Fort, had announced the launch of rupees 1 lakh crore Gati Shakti Yojana. And this budget has given wings to this highly ambitious plan. This year's Union budget also focuses on the Production-Linked Incentive (PLI) scheme, which aims at meeting our goals of making Atmanirbhar Bharat. PLI scheme has got very encouraging response, which will lead to generation of 60 lakh new jobs and increased production worth rupees 30 lakh crore in the next 5 years. It will keep the foundation of New India. The budget has the provision for constructing new 25,000 kilometers national highways with an expenditure of rupees 20,000 crores. Our government has also made plans to interconnect 5 big rivers with the help of Jal Shakti Mantralaya. With rupees 44,605 crores will be spent on the Betwa Link project, which will be lifeline for 62 lakh people living in the Bundelkhand region. I thank our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for this very important initiative. The Bharatiya Janata Party, the NDA government, at the center, under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji, is committed to agricultural development, welfare of farmers, and doubling their income. The government has made a provision for record purchase on MSP. In the budget, special steps have been taken to promote organic farming. Special focus will be given on the land of the farmers living in the banks of Ganges, for which a 5-kilometer wide corridor has been planned. The plan for digitalization of land records has also been emphasized. More steps have been taken by government to provide additional credit to the help of 130 lakh MSMEs in this budget. Financial assistance of about 6,000 crore will be given to the MSMEs in the next 5 years. In addition to an additional loan of rupees 2 lakh crore has been arranged. In this budget, the Pradhan Mantri Awas Yojana has been given an expansion. 80 lakh additional houses will be built for the poor. For this, a budget of rupees 48,000 crore has been allocated in the budget. Strengthening the federal structure of India, Shri Narendra Modi ji government has announced an allocation of rupees 1 lakh crore to the states in the 2022-23 budget, which will be interest-free for 50 years and will be separate from the normal loan given to the states. I welcome Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji
and Union Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ji for this historic decision and for this historic step. A provision of rupees 1,500 crore has been made for the development of the Northeast region. This announcement and the communication has begun. Simultaneously, the control, the capability, the Vatsalya, the racial breed 2.0 mission was also launched. The government has decided to open 2 lakh more Anganwadis. All 1.5 lakh post offices in the country have been linked with the banking. Now, on completion of 75 years of independence, 75 digital banks will be set up in 75 districts. All post offices in the country will be linked to the core banking system. About 8,500 old laws and 1,486 central laws have been abolished. The green clearance window will be expanded. One nation, one registration policy has been launched. Due to the closure of the schools during the pandemic, the children of the village were deprived of education for 2 years. Now the channels will be increased from 12 to 200 under the One Class, One TV channel program for such children under the PM eVidya. These channels will be in regional languages. A digital university will be set up. The provision to confiscate the property found in tax raid to curb corruption is commendable. Corporate tax has been reduced from 18% to 15%, which will give a boost to the industry. 25% of the defense budget will be opened to the defense R&D industry. Startups and academia, private industry will be encouraged to design and develop military platforms and equipment in collaboration with DRDO and other organizations through the SPV model. I once again congratulate Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ji and their entire team for this historic budget. This general budget will give new strength to the economic cycle of the country coming out of the COVID transition period and will help all